नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम के सेशन में मैं आप सब लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में बहुत बार नुकसान होता है। और मेरा ये मानना है कि जब भी बिजनेस में नुकसान होता है, इसका मतलब होता है कि हम हमारे कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोगों के कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाते हैं, तो आपका बिजनेस आपके कस्टमर्स के पास से और किधर भी नहीं जाएगा और आपके बिजनेस में नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर एवरी टाइम सेटिस्फाइड बना रहे और आपको आपका बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो मेरा और एक मानना है कि आपको आपके बिजनेस में बॉस नहीं बल्कि एक लीडर बनने की कोशिश करनी चाहिए। और बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, बिजनेस में किस तरह से हम लोग हमारे ग्रोथ के बारे में सोचें, कैसे हम डेवलपमेंट के बारे में सोचें, इसके लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स काम करता है। और थोड़ा सा हम लोग आज का सेशन चालू करने से पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के बारे में समझ के लेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस ओनर्स के लिए काम करता है। बेसिकली इसका जो पर्पस है वो पर्पस है इंडिया के जितने भी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में कंपनीज है, बिजनेसेस हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, एक वॉइस ऑफ द इंडियाज बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज का वॉइस बने। इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर्स के में से जितने भी मेंबर्स इस फेडरेशन के साथ जुड़े, उनके लिए एक नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म बने। तो ये सारी चीजें फिप के बारे में है। फिप का थोड़ा सा हम लोग डीएनए क्या है, विजन मिशन क्या है, उसके बारे में समझ के लेंगे। फिप का जो डीएनए है, इट्स अ सस्टेनेबल ग्रोथ, एम्पावरमेंट, क्रिएशंस एंड शाश्वत विकास, सशक्तिकरण एंड सृजन, यही फिप का डीएनए है। इसके साथ में जो फिप बना है, इसका पर्पस हम लोग जान के लेंगे। फिप का जो पर्पस है, टू इंश्योर कंटिन्यूअस वैल्यू क्रिएशन फॉर ऑल आवर कोलैबोरेटर्स, हमारे सभी सहयोगियों के लिए निरंतर मूल्य सृजन सुनिश्चित करना, यही फिप का उद्देश्य है। फिप के विजन के बारे में हम लोग जान के लेंगे। फिप का जो विजन है, टू ग्रो एज ए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लीडर ऑफ द नेशन थ्रू एब्सोल्यूट एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरिंग एक्टिविटीज, पूर्ण उद्यमिता सशक्तिकरण गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र के आर्थिक विकास के नेता के रूप में विकसित होना, यही फिप का विजन है। इसके साथ में मिशन स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इट्स अ क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास बॉडी ऑफ इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, entrepreneurs, businessmen and professionals to provide a platform to 5 lakh SMEs for the economic empowerment। दोस्तों, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रभावशाली और शक्तिशाली उद्योगपतियों, उद्यमियों, व्यापारियों और पेशेवरों का एक विश्व स्तरीय व्यासपीठ बना के 5 लाख एसएमईज को एक मंच प्रदान करना, यही फिप का मिशन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स ये चाहता है कि जो अपने देश में बिजनेस बन रहे हैं, वो बिजनेस को किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल बने, इस बिजनेसेस को किस तरह से हम लोग एक अच्छे तरह से प्लेटफॉर्म दे, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर से आके लोग अपना बिजनेस बढ़ाए, बिजनेस बढ़ाते समय हमारा इकोनॉमी डेवलप हो। तो इस तरह का फिप का मिशन है। इसके साथ में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि फिप का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करेगा फिप। तो कोर ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इनिशिएटिव फॉर द ट्रेनिंग्स, लर्निंग्स एंड मेंटरिंग एक कोर ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ में इंस्पायर टू प्रमोट टू कोलैबोरेशंस, पार्टनरिंग एंड इन्वेस्टर्स, जो बिजनेसेस है उनको कोलैबोरेशंस करने के लिए, पार्टनर करने के लिए एंड अलग अलग इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में लेके आने के लिए हम लोग यहाँ पे इंस्पायर करने वाले हैं। इंटरेक्टिव एंड ग्रुप मीटिंग्स, यहाँ पे अलग अलग बिजनेस ओनर्स के मीटिंग्स होने वाली होती है। इसके साथ में इनिशिएटिव फॉर द वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स, एग्जीबिशंस एंड रोड शोज, जिसकी वजह से हमारा नॉलेज बढ़ेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी।
and provide a platform for the networking, relationship building across the cities and countries. पूरे विश्व में हम हमारे बिजनेस को किस तरह से लेके जा सकते हैं और उसको लेके जाने के लिए अलग अलग नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं. इसके साथ में टू डेवलप द मैकेनिज्म फॉर द रेफरल्स, कनेक्शंस एंड लीड जनरेशंस. हमारा बिजनेस जो चलता है वो प्योरली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बिक्री के ऊपर ही चलता है. तो वो करने के लिए क्या जरूरी है? तो जरूरी है आपका रेफरल, अलग अलग कनेक्शंस एंड लीड जनरेशंस. उसके बाद ही आपका सेल्स कन्वर्जन होता है. सो एक मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप होने वाला है. इसके साथ में टू टेक इनिशिएटिव फॉर द बिजनेस कॉन्क्लेव्स विद द अदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस एंड प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस. भारत में जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस है एंड प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस है, उनके साथ बात करके उनके जो मेंबर्स है वो मेंबर्स, फिप के मेंबर्स एंड इंडस्ट्री में जितने भी बिजनेसेस है उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. इसके साथ में टू फोकस अ रिच इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल्स ग्रुप, अलग अलग इंडस्ट्री का एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए ग्रुप्स बनेगा, अलग स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए ग्रुप्स बनेंगे. तो जितने भी इंडस्ट्री है, प्रोफेशंस है, सबके लिए एक स्पेसिफिक फोकस बेस्ड ग्रुप्स यहाँ पे बनेंगे, जिससे उनके जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसके ऊपर काम कर सके. इसके साथ में प्रमोट हेल्थ, सोशल, इन्वायरमेंटल एक्टिविटी जो हर एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है. इसके साथ में बायर्स एंड सेलर्स के लिए भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा कि यहीं पे आपको बायर मिलेगा और यहीं पे सेलर मिलेगा. तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनेगा. इसके साथ में क्रिएट अ मल्टीपल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स. एंड इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू सपोर्ट इंडस्ट्री फॉर द पॉलिसी चेंज एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस अलोंग विद द गवर्नमेंट. वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्री में जरूरत है, वो जरूरत है गवर्नमेंट के पास से कैसे हम लोग कंप्लायंस कर सकते हैं. जो भी नई चीज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है उसको कुछ रिकमेंडेशंस देना है, कुछ चीजों के लिए इंप्लीमेंटेशंस करने के लिए हेल्प करना है. तो इंप्लीमेंटेशन एजेंसी करके ही भी फिप आगे जाके काम करेगा. तो इस सारी कोर ऑब्जेक्टिव्स फिप के साथ में है. सो ये कैसे होता है? तो बेसिक थंब रूल है कि हेल्प योरसेल्फ बाय हेल्पिंग द अदर्स. आप लोगों को हेल्प करके खुद को हेल्प करो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए. तो ये थंब रूल के ऊपर यहाँ पे काम करने वाले, हेल्पिंग पीपल्स एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी. इसके साथ में अगर हर एक बिजनेस अगर बढ़ता है, मेरा खुद का एक अकेले का बिजनेस बढ़ता है, उसमें से थोड़ा बहुत बदल होता है, तो बिजनेस डेवलपमेंट के साथ हमारा पूरा इंडस्ट्री डेवलप होता है. और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ साथ में हम लोग, हमारा इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होता है, हमारा जीडीपी इंप्रूवमेंट होता है. तो फाइनली आप खुद के बिजनेस के लिए काम करो, आप कंट्री के लिए काम कर सकते हो, आप कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हो. तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है. इसके साथ में जो इंडस्ट्री की कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर सॉल्यूशंस देना है. तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है एक दूसरे को हेल्प करने के बाद. यहाँ पे बिजनेस के साथ साथ हम लोग पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ नॉलेज है, टैलेंट डेवलपमेंट है, खुद का पोटेंशियल डेवलपमेंट करना है, सपने देखना है और सपने प्रैक्टिकल में उसको कंप्लीट करवा के लेना है. ह्यूमन कैपिटल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है. तो ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे काम होता है. इसके साथ में प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यहाँ पे एक्सपर्ट मेंटर्स है, अलग अलग तरह का कंसल्टेशंस यहाँ पे होता है, अलग अलग बिजनेस प्रैक्टिसेस यहाँ पे करवा के ली जाती है. लर्निंग के लिए बहुत सारा चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल्स है, खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है. सो इस तरह से पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है. इसके साथ में मैं बोलना चाहूंगा कि आप बिजनेस में हो या पर्सनल लाइफ में हो, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप. आपके जिंदगी में जब आप काम करते हो कोई भी, तो रिलेशनशिप के ऊपर ही काम होता है. रिलेशनशिप विद द सेल्फ एंड अदर्स होगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, सेल्फ अवेयरनेस है, कोलैबोरेशन है, बिलोंगिंग है. इसके साथ में बहुत सारे फन्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज है. तो ये सारी चीजें
इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग प्रमोट करते हैं। आपका खुद का रिलेशनशिप अगर अच्छी तरह से काम करता है, अच्छी तरह से आप रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपको दुनिया में किसी की भी कमी नहीं पड़ने वाली है। सो जो भी आपके जिंदगी में हो रहा है वो रिलेशनशिप की वजह से ही हो रहा है। ये जरूरी है कि इंटरपर्सनलशिप रिलेशनशिप डेवलप करो। अगर इंटरपर्सनलशिप डेवलपमेंट होती है तो डेफिनेटली हम लोग हमारे बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस को कम करने के लिए भी कुछ चीजें करनी जरूरी होती है। हम लोगों ने एक 6 टाइप के बिजनेस चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि बिजनेस स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग है, रिक्रूटमेंट है, मैनेजमेंट, सेल्स एंड टेक्नोलॉजीज। ये 6 टाइप के मेजर बिजनेस चैलेंजेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन ये मेजर 6 चैलेंजेस अगर हम लोग अच्छी तरह से डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के 80% चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स रिमूव हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ में जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम के ये सेशन में, और ये सेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोगों को पता ही नहीं होती है, और पता नहीं होने की वजह से वो हम लोग हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। इसलिए 1 अप्रैल 2021 से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम का सेशन स्टार्ट किया है, और आज 35th लाइव वेबिनार है जो इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम का है। अभी तक 34 इंडस्ट्रियल अवेयरनेस हो चुके हैं, और सारे के सारे सेशंस फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप फिप कनेक्ट टाइप कीजिए, आपको सारे के सारे सेशंस वहां पे मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ में फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होता है, जैसे कि बिजनेस नेटवर्क एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर वीकली बिजनेस मीटिंग्स होती है, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ओपन नेटवर्किंग होता है, 8 बजे से 10 बजे तक एक स्ट्रक्चर एजेंडा में बिजनेस मीटिंग होती है। यहाँ पे हम हमारे बिजनेस का प्रेजेंटेशन देते हैं, एक दूसरे को बिजनेस बताते हैं हम लोग क्या बिजनेस करते हैं, लोगों का रिक्वायरमेंट समझ के लेते हैं, एक दूसरे के लिए रेफरल जनरेट करते हैं, कनेक्शंस जनरेट होता है। इसके साथ में यहाँ पे कुछ एजुकेशन स्लॉट्स भी होते हैं जहां से हम लोगों को हमारा इंप्रूवमेंट्स करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इस तरह से बिजनेस मीटिंग्स एवरी वीक वेंसडे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक होता है। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपके स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और ये स्क्रीनशॉट लेके ये मीटिंग लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और एवरी वीक हमारे साथ आप जुड़े। डेफिनेटली हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। इसके साथ क्या हो रहा है, तो अभी तक कुछ बिजनेस चैप्टर्स फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च हुए हैं, जिसमें शिवनेरी फर्स्ट चैप्टर था, उसमें 24 मेंबर्स है। ऑलमोस्ट 447 से ज्यादा रेफरल्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सचेंज हुए हैं। 46 लाख का बिजनेस ये प्लेटफॉर्म के ऊपर लास्ट मंथ में किया हुआ है। इसके साथ में कुछ ज्यादा चैप्टर्स हम लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली पैन इंडिया एक चैप्टर रहेगा, और महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 7 चैप्टर और हम लोग इमीडिएटली लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ क्या होता है, तो मंडे टू फ्राइडे ये 5 दिन एक बिजनेस कट्टा का मीटिंग होता है, जो आपको लिंक सामने दिखता है, सेम लिंक रहता है, बिजनेस आईडी एंड पासवर्ड सेम होता है। तो यहाँ पे आप आ जाओ, आपके बिजनेस के डे टू डे बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो एक दूसरे के साथ शेयर करो, लोगों के साथ दोस्ती करो, फ्रेंडशिप बनाओ, और एक दूसरे के बिजनेस में हेल्प करने का कोशिश करो। इसके लिए एक बिजनेस कट्टा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है, और इसके लिए कोई फीस नहीं होता है, कोई चार्जेस नहीं होती है। तो यहाँ पे आप आ जाओ, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बनाओ और बिजनेस बनाओ, फ्रेंडशिप के साथ बिजनेस बनता है। दोस्तों, एक बिजनेस कट्टा का एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। सो जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा है, इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइव सेशंस 35, और आज का जो सब्जेक्ट है, व्हाई पेटेंट कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग सक्सेसफुल बिजनेसेस। और ये सेशंस लेने के लिए हम लोगों ने आज इनवाइट किया है डॉक्टर सुनीता जाहिरबादकर इनको। सुनीता मैम, मैं ये प्लेटफॉर्म पे ऊपर आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सब पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स में सुनीता मैम को वेलकम कीजिए। सुनीता मैम के लिए आप वेलकम लिखिए चैट बॉक्स में।
सुनीता मैम का हम लोग स्वागत करेंगे आज के सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। आगे बढ़ने से पहले मैं सुनीता मैम के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा कि सुनीता मैम का बैकग्राउंड क्या है। सुनीता मैम के लिए के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ के लेंगे, उनका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पे लेंगे और उसके बाद मैं सुनीता मैम को आज का सेशन हैंड ओवर करूंगा। सुनीता जहीराबाद कर पिछले 23 वर्षों से कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द वुमेन्स पुणे में अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग के डीन एंड प्रोफेसर है। उन्होंने लगभग 27 ईयर से ज्यादा शिक्षण, उद्योग और अनुसंधान का अनुभव है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और पत्रिकाओं के में उनके 24 से अधिक शोध प्रकाशन हुए। उन्होंने कई वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं पर काम किया है। वर्तमान में वह इसरो के सहयोग के साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित शोध परियोजना पर काम कर रही है। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, पत्रिकाओं के लिए एक समीक्षक के साथ साथ सत्र अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित ई बिजनेस के 2 पुस्तक और PHI लर्निंग द्वारा बिग डाटा एनालिटिक्स की लेखिका भी है। इसके अलावा उन्होंने सह लेखक के रूप में कुछ पुस्तक अध्याय किए हैं। उनकी रुचि के क्षेत्रों में बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि शामिल है। उनकी रुचि और अध्ययन के क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR यानी बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर कुछ व्याख्यानें भी दिए हैं और उसी पर पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे हैं। हाल ही में डॉक्टर सुनीता को ग्लोबल एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड्स द्वारा सम्मानित किया है, विमेन इन साइंस एंड इनोवेशन अवार्ड्स के ऊपर से। ये सारी चीजें थी सुनीता मैम के बारे में। मैं चाहूंगा सुनीता मैम के लिए वापस से आप वेलकम कीजिए और आगे का सेशंस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आप डिटेल में बताने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको सेशन आज का हैंड ओवर करता हूँ। Thank you, sir. Welcome and thank you for such a nice introduction about me and saying so good words about me. पता नहीं मैं आपके इतना अच्छा हिंदी बोल पाऊंगी या भी नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी. So please bear with me. I'll talk in English as well as if possible in Hindi also. So मेरा हिंदी थोड़ा सा adjust कर लीजिए. Yes, sure, ma'am. Thank you. Shall I start? Yeah, sure, ma'am. Yeah, I'll share my screen. Sir, is my screen visible? Yes, आपका स्क्रीन दिख रहा है, मैम. Thank you. Hello everyone, very good evening. And last lecture we started with the introduction of intellectual property rights, that is IPR, and we tried to see that how it is important. Just a second. Yeah, and we tried to see how intellectual property rights is simple, common, easy to understand, and we can very easily use it in our day-to-day life. We tried to see few examples as how people are using intellectual property rights. And at the same time, we tried to see that how we Indian people are a little behind, not much now, but we used to be behind than other countries, and so how we need to work on this. So I thank Devkar sir and his whole team for giving me this opportunity to come once again
in your forum and address you all people about this, again, a very interesting topic and which is very close to my heart, that is intellectual property rights. But this time he has requested me to a little bit change it and talk more on how we can use this for developing successful business. So I'll be talking on how patents, copyrights, trademarks are important component for a successful business. So let's start. So last lecture we have seen that property is something, for example, I can once again bring it here. So property designates those real or intellectual goods that are commonly recognized as being the rightful possession of a person or group. So if I have a rightful possession of something, then I say that this is my property. So this is my house, this is my car, isn't it? So it's my property. So the physical property is one type of property and the intellectual property is another type of property. So suppose tomorrow I have written a book or I have taken a very nice click, and if I see that someone else is using that click and saying that I have clicked this photo, we feel bad because it's our creation, isn't it? And someone is taking credit of it. Or suppose I have written a book and I see that the book is being, sold on footpath and I'm not getting anything out of it. Or I have written a poem and I see on WhatsApp that someone else is forwarding my poem and have added their name at the end of poem. So we feel bad. But we do not have anything to prove that it's my poem. How I can prove that it's the poem written by me only? I mean, I cannot have a nameplate on that, or I cannot have a registration to the registration office and the government will help me prove that this is my poem. But yes, we can do that when we accept the fact that this is my intellectual property. So this is something I have created. It's my creativity. It's my intellectuality. This is my creation. And if we accept that there is an intellectual property also, then we can surely accept that this property is just similar to your physical property, which you can register with the government office. And if someone try to misuse it or try to use it without your permission, government can help you. That can become a typical criminal case, and government can help you get your property back and get your fame back. So fame is very important. Suppose someone has used my poem, my book, and said that this is mine, and people have accepted it. Okay, and tomorrow I fight for it, government helps me, and then I prove that it's my poem. Government will help me get my even fame back. That government will try to publish it everywhere, will help me publish it everywhere, and get my fame back, get my losses back, and so on. What you need to do for all this is you need to register it. You need to go to the registration office and register it. So there are very similarities between the physical property as well as the intellectual property. Similar to physical property, you have to find its commercial value. You have to go to the registration office, pay the fees to register it, have to, witnesses, and so on. So the same way, if you have any creative intellectual or creative property, we'll see what are different intellectual properties. But if you have created a intellectual property, you can go to the registration office, okay, fill few forms, attach the proofs, pay the fees, and then register your intellectual property with the registration office. So patents have patent office, copyright has copyright office, trademarks have their trademark office, and so on. So whatever is your intellectual property, you can register it. Once you register it, now you can see the similarities between the physical property, like you have bungalow, car, ornaments, and whatever, and the intellectual property like patent, copyrights, and so on. So the first similarity is controlled use of property. I can decide who will use my property. So if I have a house, a big house, I can decide who will stay in that house. Either I
myself can stay there with my family, or I can allow my brother, sister, my relatives to stay there, or I can give it to my friend, or I can give it to my friend for his business, or I can lock it and just give the surrounding area for some office or some gym or some whatever it is. So I can have the controlled use of my property. Okay. And I can decide who can use it, and at the same time, who cannot use it. Okay. So I can stop someone entering in my bungalow. Similarly, I can stop someone using my intellectual property. And at the same time, I can either use myself, my property, or I can give it to someone so that that person can use it, earn money, get the fame, and so on. Benefit from property. Benefit from property, like I can either earn money, I can rent my property, I can license it in the sense, for example, I have written a book. Okay, so I have written a book. I can give this book to the publisher, and the publisher will, print it, sell it, market it, and decide to whom to sell, at what price to sell, and so on. So now this is licensing my copyright to the publisher. Or suppose I have a patent, I have invented a very different type of a fan, for example, and now I want this, I want to use this fan, but I don't have that capacity to have a plant where I can have all the machineries, I can appoint people and then make these fans, right, and then sell this fan and earn money from my patent. I don't have that capacity, or I'm not of that person, that kind of a person. The entrepreneurs are, you all people are entrepreneurs, I respect. It's not so easy. So the entrepreneurs are real risk takers. I'm not a risk taker, so I may not be able to make fans and sell them. So what I can do is I can give my license, or I can license my patent to someone who can make and sell my fans, and then I can get the benefit from my this patent. Either I can rent it, in the sense I can give this for 2 years, and the manufacturer will manufacture and sell it for 2 years and give me some lump sum money, or it can be monthly, or it can be like a royalty, that is every fan the person sells, I'll get 10 rupees or I'll get 50 rupees. So that is called as royalty. So royalty is more popular in books and other thing, where every book is being sold by that publisher, we get the money, or the author get the money. So the royalty is one way of getting the benefit from your intellectual property, or it can be like renting, licensing, or even similar to your physical property. The third part, you can see the transfer or sale of the property. I can sell my property, I can sell my patent to someone, right? I can sell my patent to, I have a fan and I can sell it to whom? Say Usha fans, or there are many fan companies. So I can, Crompton Graves, I can sell my patent to them, they'll make and sell it, and I'll get one-time money, and that's all. Or I can donate it. So last time we have seen Professor's video, I forgot the name, who has invented how plastic can be used to make roads, which are very durable roads, and at the same time you can use the plastic for good purpose. So disposal of plastic, and at the same time converting it to some useful thing. So we have seen that patent, and we have seen that patent, that professor have donated it to Government of India. So the Government of India can use the plastic in making roads in every part of the country, and the government need not to pay anything to the professor. So that is donation. So like you can donate your house, your ornaments, you can donate your bungalow, land. Similarly, you can donate your intellectual property. And as I said, exclude others from use of property. That is, if you have registered your intellectual property, the government will help you, exclude others if they are using your property without your permission. So this already we have seen in our last lecture.
but just to set the context, I repeated it. So in short, the intellectual properties are the creation of mind, such as inventions, literary and artistic work, symbols, names, images, designs used in commerce. So used in commerce is very, very important, um, my friends, because again I remembered I have to use Hindi also, so I'll use little bit Hindi here. अगर मैं किसी ने कुछ इन्वेंशन किया है एंड आई एम अ टीचर, तो मुझे वो बच्चों को इन्वेंशन सिखाना है, ओके या फिर मुझे उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने हैं, तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन यूज इट. नाउ सी these images, you can see the bungalow image, the photos, the car, and these images I have taken from internet. Someone might have clicked them, isn't it? I have copied it. So actually I am infringing. Infringing is using someone's intellectual property without permission. तो मैं उनका ये intellectual property use कर रही हूँ मेरे presentation में, right, without their permission. So actually तो ये infringement ही हुआ है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि मैं ये किसी को पढ़ाने के लिए, to teaching and learning process for experimentation, I can use it. बट मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर मैं इसमें से कुछ मनी अर्न नहीं कर रही हूं, अगर मैं कुछ पैसा कमा नहीं रही हूं इसमें से, मेरा कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं है इसमें, तो आई कैन एनी टाइम यूज इट. तो आई कैन बाय अ बुक, उसके कुछ कट करके आई कैन मेक अ प्रोजेक्ट एंड सो ऑन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर मैं उसके कुछ पिक्चर्स लेके मेरे बुक में लिखती हूँ और मेरा बुक में सेल करती हूँ, उसमें से पैसे कमाती हूँ, तो वो हो गया infringement. So anything, if you are using someone else's work without their permission to earn money, some commerce is used in that, then in that case it's a illegal use. But if it is not, then it's fine. Suppose किसी ने एक इस तरह का ड्रिंक इवॉल्व किया है या कुछ बनाया है कि जिसमें नींबू पानी और सॉल्ट और या कुछ अलग तरीके से कुछ डाल के जो एक क्या कहते हैं, एक ड्रिंक जो बनाते हैं, उसका टेस्ट कुछ अमेजिंग है, एंड दैट पर्सन हैज फाइल्ड अ पेटेंट फॉर दिस. ओके, तो अभी अगर मैं ये शरबत या ड्रिंक घर में बनाती हूँ, बच्चों को पिलाती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं तो भी देखा है कि इस तरह का ड्रिंक बहुत टेस्टी होता है, तो मैं ये घर पे आके बनाती हूँ, बच्चों को पिलाती हूँ, कोई इश्यू नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मैं मेरे कॉलेज में जाके मेरे फ्रेंड्स को भी पिलाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द मोमेंट आई स्टार्ट सेलिंग दिस and get money from this, there is a problem. So we need to remember that we not only have to protect our intellectual property, but also respect others property. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना प्रॉपर्टी तो प्रोटेक्ट करना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरों का प्रॉपर्टी भी समझना है, उसको रिस्पेक्ट करना है और इलीगली यूज नहीं करना है. सपोज मुझे कल एक कुछ बहुत बढ़िया आइडिया आ गया कि मैं एक इस तरह का टेबल लैंप बनाती हूँ कि जिसमें मैं, अगर मेरी आंखें खुली है 10 मिनट के लिए कंटिन्यूअस, तो वो लाइट चालू रहेगा, द मोमेंट मुझे झपकी आ जाए वो लाइट बंद हो जाएगा, है ना. रात के टाइम पे मैं नाइट लैंप यूज कर रही हूँ, तो उसमें मैंने कुछ इस तरह से सेंसर्स बिठा दिए कि 10 मिनट मैं कंटिन्यूअसली पढ़ रही हूँ, जैसे कंप्यूटर पे होता है ना कि अगर आप माउस घुमाते हैं तो 10 मिनट तक अगर माउस नहीं घुमाते तो वो स्क्रीन बंद हो जाती है. तो उसी तरह से मैं कुछ नाइट लैंप इन्वेंट करती हूँ, लेकिन वो नाइट लैंप यूज करने के लिए जो मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ उसमें कुछ एक सेंसर है, ओके, जो मेरी आंखों का ब्लिंकिंग जो है वो डिटेक्ट करता है, काउंट करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, आई एम गिविंग सम रैंडम एग्जाम्पल्स टू यू. तो वो जो सेंसर है ना, वो किसी ने तो भी पेटेंट किया हुआ है, ओके, और पेटेंट इज फॉर 20 years. We need to remember every patent is for 20 years, and after that knowledge gets available to the society. उसके बाद कुछ नहीं है उसका. तो जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया, किसी ने एरोप्लेन इन्वेंट किया, किसी ने टेलीविजन इन्वेंट किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन अभी हमें बल्ब लेने के लिए उसको पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो राइट है वो 20 years तक ही है. यू गेटिंग? तो 20 years तक अगर राइट है तो वी नीड टू पे हिम हर
if we are using his or her invention. लेकिन अगर 20 years के बाद है तो we need not to pay. But अभी जो मैंने ये लैम्प इन्वेंट किया है उसमें जो एक सेंसर है उसका जो पेटेंट है वो अभी उसका 20 years नहीं हुआ है. I was not aware of this. Okay, I was not aware of this. I just bought the sensor and then I made that bulb, the night lamp, and then I started selling it, calling it, it's my patented product. Now I have got a patent on this, the whole product, लेकिन उसका जो एक part है, एक पूर्जा है, that is patented by someone else, and tomorrow you are selling your patented product and earning money out of it, which has to have some share to that patentee who has invented that sensor. Are you getting? So in that case, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये हो गया infringement, क्योंकि आपने वो नाइट लैम्प बना के बेचना शुरू किया हुआ है. So my point here is आपको सिर्फ आपका इन्वेंशन प्रोटेक्ट नहीं करना है, तो दूसरों के इन्वेंशन समझ के केयरफुली अपना प्रोडक्ट बनाना है. So this is very important for business people कि if you are launching some new product, you have to have a very serious and rigorous market survey, and you have to always search even the product which you are trying to launch. Does it have any cross section, intersection with any patented product? अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो उस एरिया में ऑलरेडी इस टाइप का कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी पेटेंटेड है या नहीं, एंड सो ऑन, एंड देन अकॉर्डिंगली विल हैव टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, सेल योर प्रोडक्ट, and so on. So what in short I'm trying to tell you is protecting your intellectual property or understanding the intellectual property has two aspects. Both of them are two sides of the coin. The first side is protect your own property, respect your own property, get the respect for your intellectual property from others, but at the same time the other side is respect others, understand others' intellectual property, and for that we need to have this major awareness of intellectual property. I can give you a small example. A few years back we have our relatives in Singapore, so we just had a normal weekend call. तो कैसे चल रहा है, सब कैसे है, उनका एक बेटा है, he was in 6th that time, तो उसका कैसे चल रहा है. तो उन्होंने कहा कि आज ही उसका एनुअल फंक्शन था जो हम गैदरिंग कहते हैं. तो मैंने कहा अरे वाह कितनी अच्छी बात है, तो क्या किया आपने. तो उसने कहा आंटी मैंने आज डांस किया. तो मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, फिर आपके जो आज के फोटोग्राफ्स है या फिर आपने वीडियो लिया होगा तो मुझे शेयर करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका डांस देखने में. तो उसने कहा नो आंटी, I cannot share those photographs and video. My school has copyright on those videos and photos. See, a 6th standard kid knows the concept of copyright, knows who owns the copyright, and respect the right, saying that I cannot share my photo. It's his own photo. He himself have danced, but he said no, I cannot share these photos because this is the copyright of my school. So this kind of awareness we need to have even in our country. नहीं तो हम लोग वैसे भी बहुत ही I'll not say famous, हम लोग ऐसे भी बहुत बदनाम है कि हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं. प्ले ग्रुप से भी बच्चा स्कूल में प्रोजेक्ट करना है तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि उसको नेट पे से जाके पिक्चर्स प्रिंट करके देते हैं, कॉपी करते हैं मटेरियल, उसको एक बड़े से पोस्टर पे स्टिक करके देते हैं या फिर नोटबुक के पेजेस पे उसको स्टिक करके देते हैं और हो गया प्रोजेक्ट. बच्चा क्या सीखता है, यही सीखता है कि किसी का भी कुछ भी उठाओ और अपना बोल के बेच दो एंड सो ऑन. सो वी डोंट वांट, और इस तरह का मेंटालिटी अभी फ्यूचर में नहीं चलेगा बिकॉज इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ. इन दिस ग्लोबल वर्ल्ड नथिंग कैन बी हिडन फ्रॉम एनीवन नाउ. इट्स वेरी ओपन वर्ल्ड नाउ. तो अगर मेरे कॉलेज का ही आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ. एक बच्ची ने एक पेपर लिखा और पब्लिश भी हो गया वो, और उसके बाद वो ऑथर का और पब्लिशर का मेल आया कि इसने जो इमेजेस ली है, इसने जो डेटा लिया हुआ है वो हमने क्रिएट किया हुआ डेटा है, हमने हमारे वेबसाइट पे उसको रखा था,
आपने डाउनलोड करके उसके पेपर में डाल दिया है ना। वो बच्ची जो है वो हमारे कॉलेज की है, लेकिन बच्ची बदनाम नहीं हो रही है, हमारा कॉलेज बदनाम हो रहा है. सो वी नीड टू फाइट फॉर दैट. We need to get that student, we need to have a proper punishment, publish it and so on to prove that कि हम लोग ऐसे नहीं है, वो बच्ची ने गलती से किया है, उसको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, और we had to say sorry because we were that moment representing our country. So हमें अभी बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है और ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे मिलती है, किसको मिलती है, और उसको दूसरों का प्रॉपर्टी को कैसे रिस्पेक्ट करना है. सो विद दिस आई विल मूव फर्दर. Yes, ma'am. Yeah, sorry. Anyone has anything to say here? Okay, so that is why I always have this note with everything I create. I keep a note that whatever I'm presenting here, it's not mine. It's not my creation. I have copied it from the World Wide Web and I'm just using it for the teaching purpose. So same is the note even here. That makes me free from any infringement because मैंने पहले ही बोल दिया है हाथ जोड़ के कि पापा मेरा खुद का कुछ भी नहीं है इसमें. I'm just trying to transfer the knowledge which I have got from different sources. So ये बहुत सेफ तरीका है. आप भी कभी कुछ करते हो तो इस तरह से सेफ हो जाओ. आप बोलो कि ये मेरा नहीं है, किसी और का है. I'm just presenting it here. Okay, so with this, the importance of intellectual property to provide incentives to the individual who have the creations, who have created the creation. We need to give some incentives to them, and so the government is involved so much in all this intellectual property, providing due recognition to the creators and the inventors, ensuring material reward for intellectual property, and ensuring the availability of the genuine and original products. Now, this is very important that if now I say that nowadays, there are many business organizations, you people might be more aware than me. There are many treaties and so on. So with these international treaties, when you have to have the export or you have to have the global business, okay, you have to prove that the product which you are trying to sell, market, export is a genuine thing. It's the original thing. You really own it. It's not like you have got something from China and sending it to US, getting something from Europe and sending it to East Asian countries and so on. ये अभी नहीं चलता है. आपको दिखाना, of course you can do this as a trading, but then otherwise ये मेरा कह के आप नहीं बेच सकते हो अभी. So for this you have to prove that it's your own product, and for that you need to get the stamp of intellectual property, and that's why also you need to register your property. So what are these different intellectual property? Now, very commonly we know the patents. The patents are the inventions. Then you have industrial design. The industrial design is another type of intellectual property. For example, आप लोगों ने मेरे यहाँ पे अभी सीजर नहीं है. अगर आपके पास सीजर है तो याद करो, हम लोग जब बचपन में सीजर यूज करते थे, कैंची जो हम कहते हैं, तो कैंची के दोनों जो हैंडल होते थे वो सेम होते थे. ओके, नाउडेज क्या होता है, अभी जो सीजर्स आते हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व, ऊपर का जो है वो छोटा गोल है, नीचे का जो है बड़ा गोल है, बिकॉज पीपल हैव ऑब्जर्व्ड हाउ पीपल यूज द सीजर एंड व्हेन दे रियलाइज दैट द सेम सीजर, द सेम फंक्शनैलिटी, लेकिन ऊपर एक ही उंगली है, नीचे 3 उंगलियां है, तो नीचे का गोल बड़ा कर दिया, ऊपर का गोल छोटा कर दिया. ये हो गया डिजाइन. किसी ने तो भी दिमाग को तकलीफ दे के कुछ नया सोचा है. इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट्स अ क्रिएटिविटी. Okay, and that type of creativity called as industrial design. So you have patent. The Caesar, whoever has invented for the first time that Caesar, is the patent invention. But जिसने उसका design change किया, that's the industrial design. Then you have copyright. We'll see copyright in detail. Mainly the books and the artistic material, the films, all they go for copyrights. Music, songs, stage show, all these go under copyright as intellectual property. Then you have trade secrets. No one knows how Coca-Cola makes their Coca-Cola. No one knows how KFC makes their burger.
So those are trade secrets. We in engineering college, we try to have tie-ups with industries, and we try to arrange the industrial tools for our students. It's very easy for mechanical students. We take our mechanical students, go to any mechanical engineering company, and we show them the machineries there. We show them how the manufacturing happens. We show them how the material is stored, how warehouses are, how sales team works, and so on and so forth. It's quite easy. But if we have to take the computer engineering student to the computer engineering organization or a company, we have a problem. हम वहां पे जाके क्या सिर्फ कंप्यूटर्स दिखाए बच्चों को? क्या दिखाए, कैसे दिखाए? क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं उनको कि आप कुछ बताओ, आप किस तरह का काम करते हैं, तो बस एक सेंटेंस में बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। किसके लिए करते हैं? बोलते हैं हम कस्टमर का नाम नहीं बता सकते, वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है। मैं कहती हूँ उनको कि आप कुछ डेटा बताओ, आप रियल टाइम डेटा दिखाओ कि आप उस पर कैसे एनालिसिस करते हैं। नहीं मैम, हम डेटा नहीं एक्सप्लोर कर सकते, एक्सपोज कर सकते, क्योंकि हमारे क्लाइंट का डेटा है एंड इट्स अ ट्रेड सीक्रेट। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज trade secret. Your business formula, your business strategies, your customers, your recipes, if any specific recipes, or what's going inside. If you have a big manufacturing company, for that matter even चितड़े का बाकरवड़ी is again an example of trade secret. आप उनकी फैक्ट्री देख सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं कि वो कैसी बनती है, आप देख सकते हैं कि वो उसको पैकेजिंग कैसे करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या डालते हैं और क्या प्रपोर्शन में डालते हैं वो हमको कभी देखने को नहीं मिलता है, एंड दैट इज trade secret. So trade secret is one of the intellectual property. Then you have geographical indication. Now this is a very different type of intellectual property. Geographical indication, have you heard about what Mysore silk, or what do you call Agra ka petha, or you have many such things. You have Darjeeling tea, or you have West Bengal ka rasgulla, you have Mysore sandal soap, and so on and so forth. So wherever Kolhapuri chappal and so on. So whenever you see that Nagpur santri, you have Nashik grapes and so on. So whenever you see that a product is a property of some geographical location, that is called as geographical indication. We have Kashmir shawl, we have Aurangabad shawl, we have Paithani, and so on. All these are the material, or all these are the goods or material or the natural products or the agricultural products which has its peculiarity because of that some geography. Darjeeling tea has a different taste, has a different what you can say, a different aroma, because that tea is being produced in that particular geographical region, Darjeeling. So no one can sell a tea calling it as a Darjeeling tea. Okay, no one can sell grapes calling them as Nashik grapes. No one will sell mangoes calling them as Alfonso mango. That's a geographical indication, and then you have to register it. So once you register it, you get a stamp which you can use on your packets and then sell it, which will have a different different stamp of quality. So the geographical indication is for quality. I hope I'm giving lots of examples from businesses, so you can relate this to your own businesses and understand that how intellectual property is part of every business. So when you understand business, you need to understand their intellectual property. So my favorite area आजकल intellectual property, तो मैं बहुत पढ़ती हूँ या कुछ भी उसके बारे में बताती हूँ सबसे, और सबको पकड़ पकड़ के उसके बारे में सिखाते रहती हूँ। तो सब मुझे बोलते हैं कि आप इतना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हो, आपको उसका फायदा क्या हुआ है? मैंने कहा कि उसका मुझे तो एक मेजर फायदा ये हुआ है कि मुझे ना पहली बार बिजनेस समझ में आ गया। ये बिजनेस होता क्या है? मैं मेरा खुद का कोई बिजनेस नहीं, करने भी नहीं वाली हूँ, लेकिन एक जो बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे आ गया है, या ऐसा मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि लोग बिजनेस किस तरह से करते हैं। हर एक बिजनेस के पीछे
क्या चल रहा है, पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फाइट है। अगर आप इस एंगल से पढ़ो या इस एंगल से देखना शुरू करो बिजनेसेस को, तो पूरा फाइट ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ और अराउंड है। आप भी देख लो, समझ लो थोड़ा सा। मैं भी कोशिश करती हूँ, आपको हेल्प करती हूँ कि आपको ये एंगल आ जाए बिजनेस समझने की। Then you have a special type of intellectual property called as layout design. This is specifically specialized for ICs, integrated circuits we make. We have integrated circuits inside our mobile, computer, and many electronic devices. We have ICs. We call them as integrated circuits. So this integrated circuit layout design is a very special type of intellectual property. If you design a different IC, that IC will not go under patent or copyright or design. It will go under a special category called as integrated circuit layout design. And then again another, there is a special type that is called as plant variety. So like we have all our agricultural products or seeds, fertilizers, and so on, all those go under the category plant varieties. And lastly, we have trademarks. So trademarks are very important again from your business point of view. So trademarks are the symbols or some image or signature or picture or color or something which sets the brand, which defines the identity of that company. So if I see LG, I understand the company is LG. If I just see M, I may understand or may not, but my kids will very nicely understand this M is for McDonald's M, isn't it? So simple M, but has set the brand. So these are called trademarks. As I said, their trademarks can be music also. For example, the iPhone has its own ringtone. So just by hearing that ringtone, you understand, हाँ आज आपका iPhone है, तो उसका वो एक स्टैंडर्ड ही बढ़ जाता है कि the person is using iPhone. और सबसे पहले इस तरह का ट्रेडमार्क was set by Nokia. आप लोगों में से किसी ने अगर नोकिया का फोन यूज किया है तो याद करो, नोकिया जब आप स्टार्ट करते हो या स्विच ऑफ करते थे नोकिया फोन को, तो एक टिपिकल टिंग 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 वाला एक म्यूजिकल टोन बजता था. दैट वाज देयर ट्रेडमार्क, एंड बाय लिसनिंग टू दैट टोन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, अरे ये तो नोकिया का फोन है, इजंट इट? तो इस तरह से म्यूजिकल टोन्स हो, ग्राफिकल इमेजेस हो, सिंबल्स हो, they can set your business brand and set the quality expectations for your brand, your product. And so the trademarks are very important intellectual properties. So have you understood this? Have you understood all these different types of intellectual properties? If not, this is for you. Yes, I got this very nice picture, so I thought I'll just add it. If you still call after this session also, if you can say that I want to patent my copyrighted trademark, you really need a class. Just a break. We had been to Vai, and there is a Ganpati Mandir, and so there I saw a very I just can't express it, but it was such an attractive poster of Shivaji Maharaj. So I said, I need to buy this. I want this Shivaji Maharaj ka poster in my home. So we went there and we were trying to buy it. And there was some line written below that image. So I said, Are va, kiti chan lilele hai. It's so nicely written about Shivaji Maharaj on this. So that the shopkeeper said, yes, this is my patented line. And I have got patent on this line. I just can't hear it. So I tried to, tell him कि अरे नहीं, ऐसा अगर कुछ लाइन है या कुछ सेंटेंस है तो उसका कॉपीराइट होता है, पेटेंट नहीं होता है. पेटेंट तो इन्वेंशन के लिए ही होता है. तो बोलता है, मैम मेरे पास सर्टिफिकेट है, आपको दिखाओ क्या, ये लाइन के लिए मेरे पास पेटेंट है. तो आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम. माई डॉटर पुल्ड मी फ्रॉम देयर एंड शी सेड, ममा बस हो गया आपका सबको एजुकेट करना, छोड़ दो, तो नहीं समझेगा. बट वॉट एवर, बट दैट्स माई पैशन टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. अगर आपका कुछ इन्वेंशन है तो वो पेटेंट है. अगर आपका डिजाइन है, आउटर डिजाइन आपने कुछ अच्छे से किया है,
तो वो प्रोडक्ट का अपीयरेंस है, या उल्टा मैं बोलूं कि अगर आपने प्रोडक्ट का सिर्फ अपीयरेंस कुछ चेंज किया है, जैसे कि कोका कोला की बॉटल है, वो बॉटल का भी शेप उसका खूब पिक्युलरिटी है, कोई और उस तरह की उस शेप की बॉटल बना नहीं सकता है, मतलब कोका कोला बनाने नहीं देती है, क्योंकि वो उनका डिजाइन है, वो उनका खुद का इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्टर्ड है। और अगर आपका कुछ कमर्शलाइजेशन या मार्केटिंग का कुछ मटेरियल है और ब्रांड है, so that can go under trademark or trade secret, service mark, and so on. So we need to always remember that the legal protection of intellectual property, if it is invention, innovation, then you can go for patent. If it is, you know, outer appearance, something which you can just see with your naked eyes, then it is design. And if it is some brand, some what I can say, some trade secret, then it will be either trademark or trade secret. But you need to remember that one product can have many such intellectual property. So it's need not that if you have an invention, it will have only one patent. You can have it as a patent, you can have it as an industrial design, and you can also have a trademark. See the example here. A fountain pen, whoever have invented fountain pen for the first time, a pen which can also store the ink. पहले हम लोग क्या करते थे, वो एक इंक का बॉटल होता था और कुछ फेदर लेके या कुछ पीपल का पत्ता लेके या कुछ भी लेके उससे पुराने जमाने के लोग लिखते थे। लेकिन जब पहली बार ये फाउंटेन पेन आए तो दैट वाज अ ग्रेट इन्वेंशन कि एक आप निब ले सकते हो और उसको एक कंटेनर भी है, उसमें आप इंक स्टोर करके रख सकते हो एंड आप लिख सकते हो, तो आपको बार बार वो डुबा के लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज अ इन्वेंशन, समथिंग टेक्निकल और सम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था वो, तो वो हो गया आपका पेटेंट। लेकिन आपने उसका जो ग्रिप है उसको एक रबर लगा दिया जिसकी वजह से आप उसको ठीक से पकड़ सकते हो, तो यूएस की लैंग्वेज में उसको यूटिलिटी मॉडल बोलते हैं। इंडिया में यूटिलिटी मॉडल नहीं है, वी डायरेक्टली हैव द इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो अगर आपने वो रबर का पैड लगा के बोला कि इसकी वजह से उसका भी फंक्शनैलिटी ठीक हुआ है, तो दैट विल स्टिल गो एज अ पेटेंट। एंड देन आपने उसको एक बहुत सुंदर सा डिजाइन किया है और अट्रैक्टिव कलर्स दिए हैं उसमें काफी सारे, तो ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन। और उसके ऊपर आपने अपने कंपनी का नाम या लोगो उसके ऊपर आपने रखवा दिया है, तो वो हो गया आपका ट्रेडमार्क। तो एक ही प्रोडक्ट है अ फाउंटेन पेन, लेकिन उसमें आपके 3 डिफरेंट टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गए। ओके, तो आपको इस तरह से सोचना है। अगर मैं इसका कुछ यूजर मैनुअल बनाती हूँ कि ये आपका फाउंटेन पेन कैसे यूज करना है, तो वो जो यूजर मैनुअल है और उसमें जो लिखा हुआ सारा है वो जाएगा आपका कॉपीराइट बोल के, राइट। सो एक ही प्रोडक्ट है, एक ही आपकी कंपनी है जो मेक एंड सेल करती है ये प्रोडक्ट्स, लेकिन आपके 4 डिफरेंट टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गए। पेटेंट हो गया इन्वेंशन के लिए, डिजाइन हो गया उसका पिक्युलर शेप और साइज के लिए, आपका ट्रेडमार्क हो गया कंपनी के नाम के लिए, और अगर आपने उसका मैनुअल भी उसके साथ रखा हुआ है तो मैनुअल हो गया आपका कॉपीराइट। तो इस तरह से आप एक ही प्रोडक्ट पे मल्टीपल हो सकता है। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नेम ऑफ द बिजनेस विल गो एज ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम, डिस्टिंक्टिव साइंस विल गो एज ट्रेडमार्क, geographical indications like as I said Mysore sandal soap, that's a geographical indication. Certification marks, collective marks are different types of trademarks only, will not go into the details, but that is the trademark in short. The creative designs will go into the industrial design type. Innovative products as well as processes will be patents, and in US language it's also called as utility models. I'm explicitly keeping US terminology because many a times people file patent in India as well as they also try to have the US patent. And then you have suppose cultural, artistic, literary works including the computer software etc, the data, it will be protected under copyright. And then the confidential business information, as I just now told you, the customer list, sales tactics, marketing strategies, manufacturing processes, and so on, those are all trade secret. So just to conclude this part, ये जो पहला पार्ट था मेरा,
to give you the introduction to different types of intellectual property, the conclusion can be regardless of what product your enterprise makes or services you are providing, it is likely that it is regularly using and creating a great deal of intellectual property. अगर आपने intellectual property का IP का चश्मा पहना है तो आपको दिखेगा आप डे टू डे आपके लाइफ में कितनी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट करते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में. थिंक, स्टार्ट रजिस्टरिंग इट, think, start protecting it, and think, start commercializing it. So that is the conclusion for this first part. If you want, I can take a small break here, and you can ask me the question up to this. Otherwise, we can continue. Yes, ma'am, we can continue. Yeah, thank you so much. So you can please remind me whenever you want, because I don't have clock in front of me. So please stop me whenever you feel. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, thank you. Yeah, it's 6 o'clock, maybe 10 minutes more. Okay. So again, just to summarize, for business people, as I said, so how IP can add value to your business? It can increase the market value. It can help you in marketing. It can help you export your goods and services. It can help you raising the finances. So if you have your own intellectual property, the financiers, the venture capitalists, they can help you, give more finance, acquiring new technology and finding suppliers and commercializing your innovative products. A little texty slide, so I'll just keep it. We already have talked a lot, but just would like to add one sentence here, ki licensing. So we already talked about licensing, that you can license your patents, trademarks, industrial design, copyrights. Okay, you can even your license your trademark. For example, Tata, they used to have Telco as their earlier trademark, right? Nowadays, they have changed it to Tata Motors, but the Telco is their trademark and they are still, protecting it, because if they stop protecting it, anyone can use it and sell their product calling it as Telco. Telco will not have any, hold on that, because they have stopped protecting their old trademark Telco. But suppose tomorrow टाटा का कोई बेटा है और वो बोलता है कि मेरा खुद का बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, तो टाटा कैन अलाउ देयर ट्रेडमार्क टेल्को का to their son, and they can, say that you can use our trademark. So trademark can also be licensed, can be sold, can be given on rent for a small period, and so on. So every intellectual property can be licensed, including your patents, trademarks, industrial design, and so on. So in the event of sale or merger or acquisition, IP assets play a very big role for bargaining and negotiation. So that is the sentence I wanted to read it from this slide. Therefore, ensure that your IP portfolio protects those aspects of the business which determine the venture's success. Reflect proprietary IP in your business books, balance sheets, business plans, and any indication that confirms due diligence on your part in the management of IP assets is likely to play a very important role in convincing investors of your company's potential. Okay, so with this, I think I have given lots of examples and tried to explain you what are different intellectual properties, but just I'll go through quickly all these properties. So patent is an exclusive right granted by Government of India. The patent is for an invention, which is a product or can also be the process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to some problem. And the patent is always for 20 years. Few examples we already know. The compass, someone has
filed a patent on this in 1824. The printing press, the telephone, the penicillin, the medicine, the penicillin, the painkiller, a big invention, a big, revolution in medical field. Electric bulb, again a revolutionary invention. The flying machine, the first flying machine when had got patented, we know who have invented the flying machine, aeroplanes. That time they called it as a flying machine. So the flying machine was the patent by Wright brothers in, which year is this? 18 something. I'm not able to see this because this talking wala, it's coming on this something 18 something. Wright brothers have filed a patent for flying machine. Television, 1930, and so on. So what are the conditions for which you can get the patent? The inventions, if they have novelty, that is something new, non-obvious, that is no one knows about it, and has some industrial application, then only you can file your invention or innovative product as patent. The grant of patent, it's a territorial, that is, if you want to have the patent in India, you have to file it in India. If you also want to sell your product in US, UK, Japan, China, you have to explicitly file your patent application in each of these countries and get the patent, and then only you can sell your product in those countries. Or sell, of course, you can do anything, but exclude others is very important. So this simple example, again, very interesting example, ring pull cans. So we know these ring pull cans nowadays, those are very popular. So these ring pull cans, whoever have invented, they licensed it to Coca-Cola, okay, 1/10 of a penny per can. So if Coca-Cola uses one can, Coca-Cola has to pay royalty as 0.1 pound of a penny. So 0.1 penny, that is 0.01 pound per can, the Coca-Cola was promised to pay them to this ring pull cans ka, the patentee. And you know how much they earn during their 20 years period from Coca-Cola is 148,000 UK pounds per day. Can you imagine? Isn't it amazing? A simple invention, ring pull can, and they licensed it to Coca-Cola. They didn't sold it, They didn't sold it कि मैंने दे दिया आपको, आप उसमें से अभी use कर लो. No, they licensed it. So what Coca-Cola has to do, they have to pay 0.01 pound per can, and they themselves were not aware ki how much this ring pull can patentees is going to earn out of this. So this is a very interesting example, and that's why I say I started understanding the business because of IP. There is another concept called as cross licensing. People earn money because of this cross licensing also, using the intellectual property. And the example, a very popular example of cross licensing. Cross licensing is आप मेरा लो मैं आपका लेती हूँ. मराठी में जे मराठीत आपण जे म्हणतात ना साटं लोटं म्हणजे माझं मी तुला देतो, तुझं तू मला दे. So that is cross licensing. So Dell has many hundreds of patents related to computers. Okay, so what they did is Dell gave their patents to IBM, and because of which they could use IBM ke lots of patents in their products. So Dell could use IBM ke products, patented products, and IBM could use Dell ke products. They need not to pay each other. So that is called as cross licensing. So people earn money because of cross licensing also. The second type of intellectual property, copyright, we already have talked about. The copyright is for original literary, dramatic, musical, artistic work, sound recording. There are two types of copyrights, moral rights and economic right. Now, this is very important, and this is something very different with respect to copyright. Like,
अगर मेरा बुक है, मैंने कोई बुक लिखा हुआ है, तो आई कैन स्टिल से दैट ये मेरा बुक है, isn't it? लेकिन मैंने इसके राइट्स पूरे पब्लिशर को दे दिए हैं. द पब्लिशर इज मेकिंग कॉपीज, सेलिंग इट एंड सो ऑन. मुझे उसका कुछ रॉयल्टी मिलता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन मैं फिर भी बोल सकती हूँ कि ये मेरा है. दैट इज कॉल्ड एज मॉरल राइट. एंड नॉट ओनली आई कैन से कि ये मेरा बुक है, बट इफ आई सी समवन सेलिंग माई बुक ऑन फुटपाथ, without that publisher's even permission, I can file a case and I can fight against that person because I have the moral rights for my product. So copyright has a special right called as a moral rights and economic rights. With economic rights, you can of course earn money, get the economic benefit. Now this is very important to understand that copyright have different ownership. So if something literary is there, like as I said, poem, book, okay, in that case the author has the ownership. Whereas if there is a drama, the dramatist, the music, the composer has the ownership. Some artistic work, that is the artist has the ownership. Photograph, the photographer. The author of a computer program, the person who has written the computer program. Or if the person is working for the company, then the company can own the copyright. Cinematographic film, the producer. Sound recording, again the producer, and so on. The most complex thing is your films. The films are very complicated things. A film involves so many people, like writers are there, dialogue writers are there, authors are there, then there is a director of photography, composer is there, lyrics is there, and sound recording is there, and so on. There is a broadcast right. A film जब आपके कोई channel पे आती है, तो those are broadcasters right, and so on. So film is the most complicated thing from the intellectual property rights, but understanding it is very interesting. So if you try understanding it, it's very interesting. Now industrial design, as I said, it's something, the feature of shape, configuration, pattern, design, colors, something which you can just solely judge by your eyes is the industrial design. So you can see the examples here. These can be the products for which people might have got the patents, but the outer look, the design, okay, people have filed the industrial design. The textile and jewelry. This market, if you feel that there is a big money from this, they can even file the industrial design. The right is for 10 years. Like we have seen, patent is for 20 years. Copyright is for 10 years. And of course, the copyright, I'm so sorry. This design is for 10 years. Copyright is throughout the life of the author and 60 years after the death. So that is the standard way. If someone has written the book, throughout the lifetime, the person has the copyright of the book. And after his death, 60 years, up to 60 years, they still hold the copyright. And after that, the material comes into the market or in the public domain. Trademarks, these are typical trademarks we all are aware of. Lux, TVS, Godrej. By seeing just their symbols only, you understand. See here, just by seeing this T, you understand this is Tata ka tea. Just by seeing M, you know that it's McDonald. But just by seeing that Apple ka design, you know that is the Apple products, and so on. So these are trademarks. Trademarks are by default, when you get the registration, it is for 10 years, and then you can renew it indefinitely for as many years as you want. As I gave you just now the example of Tata Motors. So their telco ka trademark, they are continuously protecting it, renewing it after every 10 years. There are different types of trademarks. As I said, if there is a service providing company, then that will be called a service mark, certification mark, and so on. Then we talked about geographical indications of goods. So these are few examples of geographical indications like basmati rice, Mysore silk, Mysore sandalwood oil, Coorg oranges, Madhubani paintings, Dharwadi pedha, then Tirupati laddu, Kolhapuri chappal, we to know that. And then there are few global, international
Canadian whiskey, Swiss watches. We also know Swiss chocolates, Florida oranges, champagne. Champagne is a very popular example. Champagne is actually a wine, but Champagne is the name of a small village in France. So Champagne is local to that village. And that's a very special type of a wine actually, which has bubbles coming out. Tequila and so on. So these are geographical indication. This is to protect the products in the local area. वो जो वहाँ के workers है, उनका जो स्पेशलिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्पेशल टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसमें से वो लोग कुछ अच्छा बना के उसका ब्रांड सेट करके they can make a business of it. So to have a quality, a brand, a reputation, and so on, there are geographical indications. Again, you need to register it. The first registration in for 10 years, and then similar to trademark, you can indefinitely go on renewing it after every 10 years. And then there are semiconductor integrated circuit layout design. This is again, the registration is for 10 years and you can continue renewing it. Trade secrets also, we have seen some inventions, data, information which you want to protect. By not opening it to the public and you still want to have the government's protection to that, then you can register it as a trade secret. You need not to even share that secret with government, but then you can say to the government, register it and say that this is my process, this is some recipe, this is something which I want to protect. And if someone purposely try to open it, then please help me, and in that case government can help you protect your trade secret. Plant varieties and farmers' right. This is again in India a special type of a right. In US and other countries, this whole goes to the patent category, but in India we don't have patent for plant varieties. We have a special type of intellectual property because we want to reduce the number of years. So for plant varieties, it is only 15 years. For patents globally, it is must to have 20 years. So we have this special type of intellectual property. We already talked about IPR licensing, technology transfer. This is some small statistic I tried to keep in front of you. This is an old statistic, 2018, but I couldn't get the time to get the 2020 ka statistics. But of course, if you search, you'll be able to get the statistics on WIPO site. It's called WIPO, World Intellectual Property Organization. So you can see here, the whole China has 15,42,000 number of patents in 1 year, which comes to be the 11.6% compared to the whole world. After that, US has 5,97,000 something, which is just 1.6%. Japan has the third one in the list, 313,000, which comes to be 1.5% to the overall percentage of number of patents filed in 1 year. And then you have Korea, then EPO, that is European Union, and that's actually the European Patent Office. Then you have Germany, and there is India also. Then there are other countries. So you can compare, when we compare India and China, you need to see these numbers, 15,42,000 and 50,000. So nearly that last 42,000 matches with 50,000. So 15 lakh patents they are filing every year, more than us. So see how much we need to work hard. Of course, this number has increased now, but still it's a big gap. These are PCT applications. PCT is the applications which are filed internationally. So China files 58,000 international patents, US files 57,000, Japan 52, and India is not there in the list. Gayab, chale gache. Then if I see the overall number of patent applications, so you can see here 33,26,000 patents filed in 1 year, 2018. So you can see here the proportion.
The 50% is China, 25% is US, and then in remaining 25% you can see here around 8% में पूरा दुनिया है, और बचे हुए में सिर्फ जापान, कोरिया एंड ईपीओ है. ईपीओ में भी पूरा यूरोपियन यूनियन है. तो यू कैन सी हियर चाइना, यूएस, जापान कितना ले लेता है और हम लोग कहाँ पे है. मिसलेनियस के भी मिसलेनियस में हम लोग. So these were few figures. This is another graph. Here I could see India at the last. So if you can see here at the end there is a India. जैसे कि ये ग्राफ सिर्फ इंडिया लाने के लिए बनाया गया था, तो लास्ट में इंडिया है. एंड दिस इज इंडियन रेसिडेंट्स फाइलिंग पेटेंट्स. सो अगर हम कहते हैं कि इंडिया में 50,000 पेटेंट फाइल होते हैं, तो पता है आपको उसमें से एक्चुअल इंडियंस के पेटेंट्स कितने हैं? Any guesses? Because we have so many international companies in India, and those people, when they work here, for example, IBM has a branch in India. So when IBM employee files a patent, the patent is in the name of IBM, and IBM is a global company. तो उसका कोई क्रेडिट इंडिया को नहीं है. ऑफ कोर्स इंडिया में फाइल हुआ है तो अपना नंबर बढ़ गया है, लेकिन क्रेडिट कुछ भी नहीं है इंडिया को. तो कोर प्योर इंडियन रेसिडेंट्स के जो एप्लीकेशंस है, out of those 50,000, you know how many were Indians? 13,000. Now this compare this 13,000 with 50 lakhs of China. So there we are. So just lastly, the facts. This is my last but one slide. Indians are brilliant. World has accepted it. We all know we are intelligent. Our kids can beat anyone. So our kids are also very, very brilliant. Many intellectual people are involved in research and development activities. Every day we have seen these jugards. We call them jugad because we have a fashion that we laugh on our own people. Few days back, I really liked one poster which was there on WhatsApp. Ki, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका. ओके, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे जो उधर जाके सक्सेसफुल हुए जो लोग हैं, sometimes we feel proud about them, sometimes we feel sad about them and so on, but we never think जो हमारे बड़े हुए लोग हैं यहाँ पे, उनके बारे में तो हम कभी अच्छा नहीं बोलते. अडानी, अंबानी तो हम जोक्स करने के लिए यूज करते हैं. जो लोग इंडिया में रह के इंडिया को प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, इंडिया में रह के बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया के रेसिडेंट का नीड फुलफिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनके शेयर्स लेके हम लोग ही अच्छे बन रहे हैं, हम लोग ही रिच बन रहे हैं, लेकिन हम उनका सिर्फ जोक बनाएंगे. दिस इज द वर्स्ट थिंग वी हैव, एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी हैव इन्वेंशंस वी कॉल देम जुगाड़. बट छोटे से छोटे विलेज में जाओ, आपको वहां पे जुगाड़ करने वाले लोग दिखेंगे. सो वी आर रियली इंटेलिजेंट पीपल एंड वी नो how to solve our own problems. So we are problem solvers. और हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जैसे जापान है या यूएस है, बड़े बड़े मशीनरीज है, बड़े बड़े प्लांट्स है, और ये है, हम लोग छोटा सा छोटा प्लांट करेंगे लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो वी हैव ऑल दिस कैपेबिलिटीज. MSMEs have many experts in their domain. Students, teachers, professors struggling to understand the process of patent filing, experts in this field. MSMEs struggling to identify the potential IP and IP expert. There are many R&D organizations and many institutes have well-settled IPR cells. And I'm very proud to say that apart from IITs, our own Cummins College also have a very well-established IP cell where we have our own IP policy. We follow that IP policy since last 6 years, and we encourage our students, faculty, everyone to file patents and other types of intellectual property. And the whole charges are borne by Cummins College. Student need not to pay even a single rupee. Common issues with above all scenarios is IP awareness is missing. And that's why I'm here and talking so continuously, so fast to you all, that I want to have more and more people aware about all this IP thing. And there are few misconceptions such as patent filing procedure is time consuming and costly. Believe me, government is working so hard on this, and they have made this time as least as possible and as costly as possible. Just few days back, another GR
we got, where they reduced the patent filing charges to a great extent. 1/5 they made it. See, 1/5, where we have to pay 8,000 per patent application. Now we have to pay 1,600 only. So 1/5. No availability of IP expert. This is another misconception. Government is working on that. Every year we have patent agents examination, which creates thousands of patent agents every year. And I hope very soon we'll fulfill this proportion, and then we'll be even solving this problem. And patent IP filing is a research activity? No. And it's not my job, believe me. No, it's everyone's job. Everyone can, people who, every day have new recipes, and they have their YouTube channel, and then they are, sharing their recipe with everyone. They also have innovations in their every product, every presentation, every design, every decoration. So we are creating intellectual property. We don't want to, repeat the mistakes our ancestors have done. No one have written somewhere who have invented zero, who have invented the distance to the moon and sun. We never have. We have in our Puranas that the Prithvi is round in shape, but no one has written it, and then we have to struggle to prove that we had invented it or our ancestor had invented it. Let's not make this mistake, and protect our intellectual property. So that's all, and I'm so sorry what time it is. I'm so sorry, it's 6:27. I'm so sorry. Thank you so much for patient listening, and I'll stop here. Thank you so much. I hope I have not bored you, or I have not just bombarded you so many things. So No, I'll call myself very successful even if one person from you will start reading something more on this from tomorrow. Thank you so much. Yes, perfect मैडम. हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर्स को जाने से पहले मैं सारे उद्यमी को ये कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा, उसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इसके ऊपर जितने भी बातें करें, जितने भी हम लोग समझेंगे, वो कम ही पड़ने वाला है. लेकिन इसका इंडस्ट्रियल अवेयरनेस आगे बढ़ना जरूरी है. इसके लिए हम लोगों ने नेक्स्ट सेशन भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही रखा है. और ये जो सेशन है, वो सेशन लेने के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, और वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हम लोगों को बताएगा कि ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में. व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेसेस? अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो आपको कहाँ से बिजनेस मिलेगा, कहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है जो आपको पता नहीं है. बहुत बार हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट्स का राइट लिया, ट्रेडमार्क्स लिया, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं. लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद भी हमें बिजनेस नहीं मिलता है. सो व्हाई? क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि मेरे प्रोडक्ट के लिए, मेरे सर्विस के लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. मैंने मेरे राइट्स तो सिक्योर किए, लेकिन मुझे बिजनेस अभी बढ़ाना है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को साथ में लेके हम लोग का बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 बजे सेशन लेंगे. और ये सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. इसके लिए भी हम लोगों ने एक्सपर्ट पर्सन को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है. सो नेक्स्ट सैटरडे का सेशन भी आप एंजॉय करेंगे, इसका मैं आपको सब लोगों को एश्योर करूंगा. और एवरी सैटरडे इवनिंग 5 बजे हम लोग जो इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम का सेशन लेते हैं, तो इसमें आपका अटेंडेंस होना जरूरी है. क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोगों को पता ही नहीं होती. वो पता करके हम हमारे बिजनेस में इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं. आगे क्वेश्चन आंसर्स को बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम लोग काफी ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं ये सेशंस लेने के लिए. तो एफर्ट्स लेते समय कुछ इम्प्रूवमेंट्स होना जरूरी होता है. और वो इम्प्रूवमेंट्स क्या है, वो आप ही हम लोगों को बता सकते हैं कि ये सेशन में क्या कम है, क्या ज्यादा होना चाहिए, क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या डिलीटेशन होना चाहिए. तो इसके लिए आप सब लोगों का
हमें फीडबैक्स मिलना बहुत जरूरी है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को कि आप इस सेशन का फीडबैक दे दीजिए। बसवराज प्लीज फीडबैक का लिंक आप यहाँ पे शेयर कीजिए, कि जिससे जो ऑडियंस है, जो उद्यमीज है आज के सेशन में, वो हम लोगों को उनका फीडबैक्स दे देंगे। सो ऑल टू ऑडियंस कि आप आपके क्वेश्चंस पूछिए। प्रसाद सावरे सर, आपने कुछ हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रसाद, ओवर टू प्रसाद सर। नवनाथ सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पे लिया है। और दूसरा धन्यवाद मैडम जी को कि उन्होंने बहुत खूब तरीके से ये सारी जानकारी जो है ना वो आज हमें दी है। तो मैडम जी के लिए मेरे पास कुछ 3 प्रश्न हैं। तो मैडम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपकी तरफ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू और थैंक यू। कमिंस कॉलेज का हमारा एक अलग नाता है। हम आपके पड़ोसी हैं, बिल्कुल मैं आपके कॉलेज के पास ही रहता हूँ। सो इट इज़ ग्रेट टू सी द कमिंस कॉलेज इन आवर प्रीमाइसेस। मेरे कुछ सवाल है मैडम जी। ये जो आपने बताया कॉपीराइट के बारे में, इससे संबंधित सवाल है कि मैनुअल क्रिएशंस जो होते हैं, जैसे कि आपने उदाहरण दिया ओनर्स मैनुअल, तो आजकल अभी मैनुअल्स या ये जो कंटेंट जो क्रिएट करने होते हैं, तो उसमें बहुत बार हमें इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। इसमें इंटरनेट से हम कुछ कंटेंट्स लेते हैं, कुछ इमेजेस लेते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं अपने कुछ कंटेंट के साथ में। तो इसमें अभी आपने जैसे बताया कि ये कंटेंट या इमेजेस जो हमने ली है, तो ये हमने किसी को पूछ के नहीं ली है। तो हमने जो कंटेंट बनाया है अभी, तो उसको कभी कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई आकर के हमें हमारे ऊपर में केस फाइल न करे? तो उसके बारे में बताइए। और मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो कॉपीराइट का जो इश्यू है, तो जो हम ये क्रिएटिव लोग हैं, ये जो हम कंटेंट बनाते हैं, तो हमारी एनर्जी जाती है ये सब बनाने के लिए। लेकिन इसमें कौन हमें हेल्प कर सकता है ये बताने के लिए कि ये कंटेंट जो है आपने फाइल करने हैं या इसको आपने प्रोटेक्ट करना है? तो इसके लिए कुछ लीगल टीम्स का मुझे सहारा लेना पड़ेगा या मुझे ही खुद को ये देखना पड़ेगा? और तीसरा है कि मैंने जो कंटेंट बनाया है, तो ये कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसका ट्रैकर जो है, वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? तो ये मेरे 3 सवाल थे मैडम जी। सर, मैं रियली आपको धन्यवाद देती हूँ। जो कुछ मैंने जंप मारे टाइम की वजह से, तो जो मेरे गैप्स रह गए वो आपने बराबर उठाए और मुझे बराबर क्वेश्चंस पूछे, तो आई कैन कवर दिस पार्ट आल्सो। सो थैंक यू सो मच। द फर्स्ट थिंग, द पहला क्वेश्चन था आपका कि जो आप कंटेंट्स बनाते हैं उसमें आप कहीं से कुछ अगर मटेरियल वेबसाइट से या www से कुछ लेते हो तो ये इंफ्रिंजमेंट है क्या? तो है, अगर आप ये मैनुअल बेचते हो, अगर आप उसमें से कुछ अर्थार्जन करते हो, तो ये इंफ्रिंजमेंट है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप वहां से कंसेप्ट लो कि आपको दिखा है कि एक सर्कल है, उसके अंदर इस तरह से कुछ डायग्राम निकाला हुआ है, आप अपना खुद का निकालो। ओके। सर्कल है तो उसको स्क्वायर कर दो, उसको ट्रायंगल कर दो, इस तरह से कुछ अपनी खुद की डायग्राम बना लो और देन आप आपका खुद का कंटेंट बनाओ, नहीं तो वो इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा। अगर नवनाथ सर आप अगर बुरा नहीं मानते तो आपको भी मैं एक सजेस्ट करूं, आपका जो शुरू का जो प्रेजेंटेशन था उसमें भी आपने काफी पिक्चर्स लिए हुए हैं, जो कि ऐसे लगता है मुझे कि वो शायद वेबसाइट से या कहीं से वर्ल्ड वाइड वेब से लिए हुए हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी हमने छोड़ा नहीं है, तो उन्होंने जब दिवाली के विशेष दिए थे, ग्रीटिंग बनाया था, तो उसपे जो दिया लगाया हुआ था उन्होंने, वो उनके टीम ने कहीं से तो भी कॉपी करके लिया हुआ था। एंड द पर्सन हु हैड टेकन द पिक्चर ऑफ हिज ओन दिया, ही प्रूव्ड इट टू द पीएमओ टीम दैट ये मेरा लिया हुआ पिक्चर है और आपने यूज किया। तो उनको वो माफी मांग के पीछे लेना पड़ा। तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर हमको रिस्पेक्ट करना है तो पूरा ही रिस्पेक्ट करना है अभी। तो Yes, you are perfectly right, ma'am. Definitely we will improve it. थैंक यू सो मच सर। Yeah. तो शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। दूसरा आपका सवाल था कि ये खुद को आपको ही करना पड़ेगा या कोई हेल्प कर सकता है। तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। फॉर ऑल दीज
we need patent agents. So the patent agents are certified agents. For this certification, they have to pass an exam, which is called as a patent exam or copyright exam. So वो पास करके उनको ये सब उसका जो ड्राफ्टिंग है पेटेंट के एप्लीकेशन का या कॉपीराइट के एप्लीकेशन का, उसमें दो चीजें हैं. एक जो है वो है टेक्निकल थिंग एंड द सेकंड है वो लीगल है. तो हमको लीगल प्रोटेक्शन भी लेना है उसमें. तो जो द पर्सन हु इन्वेंट समथिंग विल बी गुड इन टेक्निकल थिंग, लेकिन जो लीगल है वो हमको नहीं है. तो इसीलिए वो पेटेंट एजेंट्स होते हैं. अगर आपको चाहिए तो हमारे कॉलेज का जो ऑथोराइज पेटेंट एजेंट है, मैं उनका आपको डिटेल्स दे सकती हूँ. मैं चाहिए तो नवनाथ सर को ही दे सकती हूँ, वो वहां से पास ऑन कर सकते हैं. तो हम लोग उनकी मदद लेते हैं पेटेंट ड्राफ्टिंग के लिए और अदर टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग के सर्विसेज के लिए, क्योंकि वो लेने ही पड़ते हैं. हम लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट गुड इन लीगल थिंग्स, तो हमसे कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं. जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल ये सपोज ये डायरी है, कुछ मैंने इस तरह से इन्वेंट की है कि ऑटोमेटिकली ये मैं जो बोलती हूँ वो लिखते जाती है. सब कुछ इन्वेंशन मैंने कर लिया है. लेकिन जब मैं बोलती हूँ ये पेटेंट के लिए मैं अप्लाई करती हूँ, तो मैं क्या बोलती हूँ कि एक पेपर की डायरी है एंड विच विल हैव प्रिंटेड द थिंग्स विच आई एम टॉकिंग. तो मैंने क्या किया, जो मैं टॉकिंग है, जो पेपर है, एक डायरी है, इसको लॉक कर दिया. लेकिन लीगल लैंग्वेज में मुझे इसको अगर प्रोटेक्शन लेना है तो मैं क्या बोलूंगी, अ राइटिंग डिवाइस. Okay. सो राइटिंग डिवाइस कैन बी अ डायरी, कैन बी अ नोटबुक, अ पेपर, अ पेज, कहीं पे भी. तो मैंने मेरा स्कोप बढ़ा दिया है. तो ये वाली चीजें जो है लीगल प्रोटेक्शन लेने वाली, वो लोग हमको बेटर बता सकते हैं. मैंने कहा कि मैं जो बोलती हूँ वो लिख ले, तो मैं सिर्फ बोलती क्यों हूँ, मैंने कोई टेप लगा दिया वो भी उस पर लिख के आ जाना चाहिए ना, कुछ रिकॉर्डेड लगा दिया वो भी आना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस तरह से जो लीगल स्कोप बढ़ाने की चीजें होती है हम उनसे मदद लेते हैं. तो आप भी ले सकते हैं, आपको चाहिए तो मैं वो शेयर करके रख सकती हूँ. एंड देर आर सो मेनी सच पेटेंट एजेंट्स इन पुणे एंड ऑल अराउंड अस, सो यू विल श्योरली बी एबल टू गेट द हेल्प. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. और तीसरा आपका जो सवाल था वो क्या था? ट्रैकिंग के बारे में था. मेरी चीज अगर ट्रैकिंग के बारे में, या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर. देयर इज अ साइट कॉल्ड एज आईपी इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, ipindia.nic.in. ओके मैडम. अगर वहां पे जाके आप कॉपीराइट सेलेक्ट करते हो तो आपको वो कॉपीराइट की साइट को ले जाएगा. पेटेंट सेलेक्ट करते हो तो दूसरे पेटेंट की साइट पे जाओगे आप. एंड वहां जाके आप देखते रहिए कि कौन से किसके पेटेंट्स आ रहे हैं, कॉपीराइट्स आ रहे हैं, एंड सो ऑन. और अगर जैसे मैंने कहा कि हमारे किसी बच्ची ने किसी का तो भी कुछ तो भी फिगर्स उठा के पेपर पब्लिश कर दिया, तो जैसे उसके ऑथर्स और पब्लिशर्स हैं उनको पता चला, तो जो लोग जब वो फील्ड में काम करते हैं तो दे कम टू नो कि इस तरह से कुछ हो गया है, एंड दे कम टू नो. सो आपको बस ट्रैक रखना है. अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर्स है, आपके जैसे कोई कंटेंट राइटर्स है, आपके जैसे आपके फील्ड में डोमेन में कोई है, तो उनके मैनुअल्स पढ़ते रहो. आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं. जैसे कि वो टास्क ग्रुप्स होते हैं, यूजर ग्रुप्स होते हैं, वेबसाइट पे देखिए आप, तो उसमें एक पक्का कॉम्पिटिटर का आदमी होता है. वो कॉम्पिटिटर का आदमी उसमें आके बैठता है और उसको फिर समझ में आता है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. घर का ही भेदी बोलते हैं ना, उस तरह से. तो इस तरह से लोग काम करते हैं. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी नई सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है, आप कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, आप कौन सा अभी डिस्काउंट स्कीम लाने वाले हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस तरह से जो कॉम्पिटिटर्स है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बिजनेस में से लेना चाहते हैं, इस तरह के स्ट्रेटेजीज करके वो दे कीप ट्रैक ऑफ. बट देन देर आर मेनी सच साइट्स. आईपी इंडिया है, वाइपो साइट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन देर आर मेनी अदर. यूएसपीटीओ है, यूएस पेटेंट एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएसपीटीओ है, ईपीओ है जैसे मैंने अभी दिखाया, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस. इनके सबके साइट्स है जिस पे जाके आप सर्च करो, आपका कीवर्ड डालो, आपके रिलेटेड कुछ पेटेंट्स है, कॉपीराइट से, वो आपको दिख जाएंगे. ओके मैडम जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो थैंक यू प्रसाद जी. और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग एल्स?
सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने यहाँ पे आज के दिन में पार्टिसिपेंट्स किया। सुनीता मैम आपने काफ़ी अच्छा डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन दिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, और अभी तक के कुछ सारे एग्जांपल्स भी आपने दिए। एग्जांपल्स के तौर पे आपने हम लोगों को समझाया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों हम लोगों को उसके राइट्स लेना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे आए और ये प्लेटफॉर्म पे आके हम लोगों को गाइड किया, हम लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए आपने हेल्प किया। सो ये सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हम लोग हमारे बिजनेस को डेवलप करते हैं। सो मैं आज यहाँ पे और एक थॉट प्रोसेस बोलना चाहूँगा कि बहुत बार हम लोग हमारे बिजनेस में फेल्योर होते हैं, असफल होते हैं, और लोग बोलते हैं कि अगर भाई तू असफल हुआ है तो क्या एक्सप्रेस लो, उसको करेक्ट करो और आगे जाओ। मेरा मानना ये है कि आपको एक्सप्रेस लेने के लिए एवरी बार फेल्योर होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोग ढूंढो कि जो वो एक्सपीरियंस में फेल्योर हुए और वो फेल्योर होने के बाद उन्होंने कैसे उनको इम्प्रूव किया और सक्सेस की ओर बढ़े। तो जो असफल लोग हैं उनका अनुभव का हम लोग अगर उपयोग करते हैं तो हमें असफल होने की जरूरत नहीं है, हम डेफिनेटली उसको एवरी टाइम सक्सेस बना सकते हैं। सो इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने आज के सेशन में कंट्रीब्यूट किया, स्पेशली फॉर द सुनीता मैम। आपने आपका ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, और यस डेफिनेटली उसका बेनिफिट हम लोगों को होने वाला है। और एक भी बिजनेस ओनर ने अगर खुद में इम्प्रूवमेंट किया तो ये सेशंस का डेफिनेटली यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। Sir, thank you so much for giving me this opportunity, and thank you all of you for your patient listening. I being a teacher, I always told this to sir कि sir मुझे बीच में रोक देना, क्योंकि वो जब तक बेल नहीं बजती हम लोग रुकते नहीं हैं। तो thank you so much, but real thanks to Navnath sir for this opportunity, and I could because of him only I could connect with you all. So thank you sir. यस थैंक यू वंस अगेन। ये मेरा जॉब है कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स को लेके आ जाओ और लोगों के पास आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, और मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आप लोगों की वजह से कि मैं खुद कुछ कंट्रीब्यूट करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज तक मैंने हर्डल्स पाए हैं, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आए हैं, और वो प्रॉब्लम्स मुझे कुछ पता नहीं होने की वजह से आई है। अगर इस तरह से इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम चलता रहेगा, अलग अलग एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पे आते रहेंगे, ये सारे सेशंस रिकॉर्डिंग फॉर्म में फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस ओनर्स उसका एंजॉयमेंट करते हैं। जो भी उनका इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन उनको मिलेंगी और उनका बिजनेस डेवलपमेंट होगा। डेफिनेटली अगर खुद का बिजनेस डेवलप करते हैं वो लोग, तो उसका इफेक्ट हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ऊपर होने वाला है, और इंडस्ट्री डेवलप होती है तो हमारा नेशंस बढ़ने वाला है। तो ये सारे नेशन फर्स्ट ये फिलोसॉफी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सो थैंक यू कि आप लोग मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ये सारी चीजें करने के लिए। Really appreciate sir your work. Yeah. Great.